जय जगन्नाथ। नमस्कार समस्त सुस्वागत। मु प्रोफेसर सुनीता सरंगी आपण मानक आज द्वितीय दिन परिचय को स्वागत करुच्ची। गतकाली आम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मौलिक धारणा इतिहास और यार प्रोटोटाइपिंग उपयोग विषय जानी। आज आम यात्रा को आगक नहीं वैपारिक उत्पादन पर्यंत आज पर्यायर मुख्य लक्ष्य गुड़िक डिजिटल डिजाइन रू फाइनल प्रोडक्शन जाइबा प्रक्रिया विभिन्न 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी FDM, SLA, SLS एक्सेट्रा एवं जो उत्पादन पर 3D प्रिंटिंग रा व्यवहार मटेरियल विकास और चलन इंडस्ट्री यार व्यापक प्रयोग यथा एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, फैशन इत्यादि। यही अवसर में आपको अनुरोध करी सक्रिय भाग नि प्रश्न पचारतु तथ्य और टेक्नोलोजी गभीर चिंतन कर परिचय आरंभ करने पूर्व मुझे मुख्य अतिथि को मंच में आमंत्रण करने चाहूँगी। I would like to invite today's session keynote speaker Professor Rudranarayan Kandi sir, who is currently serving as a professor in Mechanical Engineering, National Institute of Technology, Rourkela, India. He has received his Doctor of Philosophy award from IIT Delhi, India in 2022. His research includes various manufacturing fields, additive manufacturing, bioplants, fabrication, multi-criteria, decision making and optimization. He has published several research papers on some reputed journals and patents also. He has authored and co-authored of many high-quality journals as well as 4 international conference proceedings. Today, he delivered his topic, Additive Manufacturing in Aerospace, Biomedical and Food. Welcome you, sir. Thank you, sir. Now I hand over the session to sir. Any idea what is regenerative application? Suppose in human body, any organ or any disease occurs, okay, and the organ wouldn't or it is not functioning properly. So to cure that particular organ, we need to replace that diseased portion with some biomedical implants or biomedical scaffolds. Okay,
and once we implant that scaffold, as time passes, it heals that particular disease or affected area. Okay, that means it regenerates that disease affected area and it becomes normal. Okay, so my work was a tracheal implant. Trachea means the windpipe. So the work was based on 3D printing of tracheal scaffold. Okay, trachea is basically a cylindrical scaffold. Since the windpipe, any human or any animal windpipe, it's basically cylindrical. So fabrication of those cylindrical scaffold with the help of 3D printing and characterization as well as different biomedical studies. Those are my work. So I will be demonstrating those work. Before that, I will be explaining what actually the 3D printing is. Okay, how from the history it is being evolved from different names from rapid prototyping to 3D printing. Okay, and what are different 3D printing types, how those works. Okay, I will briefly explain. So this is the scheme of my presentation. I'll start with the overview of 3D printing. 3D printing in various applications, advances in novel 3D printer in various applications, challenges and business opportunities. Okay. So as you know, there are different types of manufacturing processes. The first one is basically it is related to material removal process, where you remove the material from a stock or workpiece, right? That is basically conventional manufacturing process. So, for example, drilling, turning operation, milling operation, where you remove material from the workpiece. Okay, so that is called subtractive process or subtractive manufacturing process. There is another process which is called joining process. Joining process where you join two similar metal or two similar polymer or dissimilar polymer or dissimilar metals with the help of welding or with the help of any additive, with the help of soldering a drill. So that is called joining operation. Okay. And the third one is additive process. So additive process basically, casting operation, where you pour the casting of molten metals into the mold cavity and ultimately after collecting it you get the final part, which is exactly similar to the mold cavity, right? But in case of additive manufacturing process, it is a bit different from casting process, where we add the material or we deposit the material over a platform, one platform, in a layer by layer fashion. Since it's a layer by layer fashion, that is why it is called additive manufacturing process or layered technique or layered manufacturing process. Okay. So initially, the additive manufacturing process, it is called rapid prototyping. Okay. So in the past actually, so how the name has been evolved from rapid prototyping to 3D printing, I will explain. So in the past, for prototype development, okay, usually for complex geometry or for complex prototypes, conventional manufacturing process is quite difficult to build, right? Suppose you want to build one patient-specific bone implant. So if there was turning, okay, ODA तो ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ additive manufacturing initially in the past ଯଦି ଆମେ history ଦେଖିବା এই additive manufacturing को rapid prototyping କୁହାଯାଏ. Rapid prototyping ମାନେ ହେଉଛି prototype ମାନେ ଗୋଟେ trial version of the actual part or final part. तो से prototype को बनेଇବା ପାଇଁ जल्दी बनेଇବା ପାଇଁ ଆମେ additive manufacturing यूज କରୁଛୁ. तो ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା rapid prototyping. ठीक ଅଛି. तब since हमें इतने material add करछे instead of removing the material, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ additive manufacturing. 3D printing को ଆମେ जो ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପେପରରେ ଜେରକ୍ସ ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା A4 ସାଇଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛେ, that is 2D, right? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ଥ୍ରୁ ଦେଉଛେ, ଏ ଥିକନେସ୍ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ 3D structure ହେଉଛି. The same thing, we are just depositing the material layer by layer, one layer over another, and that is called 3D printing or layered manufacturing. So additive manufacturing are different names. One is rapid prototyping, another is 3D printing, layered technology, and
soft copy, okay, or any CAD design or computer design है, तो हम लोग फाइल को डिजाइन करते हैं, it is a soft copy, okay. तो soft file to exactly similar to the similar physical product बनेगा to this 3D printing process or additive manufacturing process by adding the material layer and preparation process. It also main definition. Basic fundamental definition also got digital part file to or digital part file to हमें physical object बनेगा केवली ना layer by layer evolution. The casting of additive manufacturing का difference होती है casting में भी directly pour the multimeter into a mold cavity, right? All of a sudden, because additive manufacturing layer by layer में add करते हैं. तो मुझे पहुँचे भी strength को तो अधिक होगा. Additive manufactured or casted part, casted part because कारण এটা additive manufacturing part है layer by layer add करते हैं. Casting में it is uniform or isotropic and इसलिए जो का it also anisotropic. Anisotropic में z direction में material का weak रहेगा और part का additive manufactured part का weak रहेगा. So this is basic definition. It is simply just look at demonstration. FDM rock. Usually filament का मेरे होगी and it is depositing over the plant. And this is one example that 3D CAD model. You can develop with any software like any CAD software like SolidWorks, CATIA or AutoCAD. Once it is developed, what I do, 3D printer को देखा है. Okay, the compound steps also are explained. And this is the actual 3D printed part. This is exactly similar to the digital file or CAD file. There is a plastic or metal. Which one? So based on the material that will be used. If you have metal 3D printer अपन पकड़े, तो metal powder देते हो तो the part will be metal part. So therefore polymer printer data देते हैं, FDM use diffusion body. The polymer filament देते हैं, the part final will be the polymer. The additive manufacturer steps. It are important basic steps of additive manufacturing. First one is CAD model. Okay, which भी CAD software है, CAD software में देखेगा SolidWorks, CATIA, Autodesk, AutoCAD, Fusion 360. तो ये सब सॉफ्टवेयर है exactly जहाँ हमको पार्ट बने तो साथ में बनेगा. ठीक है सर. पार्ट बनने से लगा है. इधर तो ये टेस्लेशन. Next part is next step is टेस्लेशन. टेस्लेशन आउटपुट सॉफ्टवेयर करो. टेस्लेशन सॉफ्टवेयर आजकल फ्री सॉफ्टवेयर भी अच्छे लाइक क्यूरा, फ्लास्टफोर्ज, अल्टीमेटर क्यूरा. ठीक है जी. तो से सब सॉफ्टवेयर में टेस्लेशन करो. टेस्लेशन माने होची जो पार्ट का बने थिबा तार सरफेस को ट्रायंगुलर माने सपोज एटा गोटे पार्ट हम बनेला 3D प्रिंटिंग एग्जैक्टली सेम डिजाइन हमें बनेला सॉलिडवर्क्स में. ठीक है जी. तो टेस्लेशन माने यार जो सरफेस अछि the surface will be converted into number of triangles और machine कर करेगा. तो मैंने surface को हमें different triangles से represent करेगा कि मैं approximate करेगा. ठीक है. The more number of triangles, the more accurate the part will be. ठीक है जी. Tesselation because a tessellation file or tessellated file का mostly compatible with the 3D printers. टेस्लेशन वाला परे स्लाइसिंग करेगा. स्लाइसिंग हम कौन पे करेगा? ये जो टोटल लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो स्लाइसिंग को ले हमें एक टेस्लेटेड फाइल लागू नंबर ऑफ लेयर में कन्वर्ट करेगा. ठीक है जी. तो स्लाइसिंग को हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा ईच लेयर में कौन अछि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट जेतो आप एटा देखि दियो डेमोन्स्ट्रेशन जदि आपको दिया तो x y z movement nozzle move करे along with there is another coordinate or there is another information that is related to extrusion of the material. एटा आपको CNC रे मिलियो. CNC रे खाली x y z कोऑर्डिनेट मिलियो. कटिंग ऑपरेशन स्पिंडल रोटेशन कैसे मिलियो. किंतु एथरे along with x y z movement और आउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो देखिए एक्सट्रूजन ऑफ द मटेरियल और एट टाइम जते से एक्सट्रूड करो. ओके.
तो से इनफॉरमेशन का प्रति लेयर रा हम इन द फॉर्म ऑफ जी कोड ज्योमेट्रिकल कोड ठीक है तो जी कोड होला परे अपन से जी कोड का 3D प्रिंटिंग मशीन रे अपन फिट कर ओके 3D प्रिंटिंग मशीन फिट कला है ये कंप्लीटली मटेरियल डिपॉजिट करने वाले लेयर बाय लेयर और फाइनली द पार्ट विल बी फाइनली द पार्ट फिट है ठीक है तो फाइनल पार्ट फिट होला परे तारे सपोर्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली कौन सपोर्ट स्ट्रक्चर एनी आइडिया सपोज आप गोटे ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर बने ओवर हैंगिंग माने सपोज ये पार्ट आप बने ठीक है ये पार्ट बने ये पार्ट जो बनेबे एटा ये पार्ट ये बेस पार्ट बन जो तब एटी अपन देखिए एटा गैप अछि ये केमति बने ये तो नॉजल एटी आसीबो पिलामेंट पर तळ पड़ जियो ना तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग पोर्शन तो माने एटी अपन यदि सपोर्ट मटेरियल देखिए देन इट कैन इजीली फिट इन द टॉप पार्ट राइट तो सेटा को ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर तो ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर में कि सपोर्ट मटेरियल दरकार सपोर्ट मटेरियल सेटा वीक और ट्री लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि इजीली रिमूव हे पाछे टू द हेल्प ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग तो से सब जिनस देखले अपन पोस्ट प्रोसेसिंग अछि एटा एफडीएम पोस्ट प्रोसेसिंग ये सपोर्ट स्ट्रक्चर रिमूव करे सिमिलरली रेजिन बेस्ड प्रिंटिंग जोटा कि एसएलए और स्टीरियोलिथोग्राफी और डीएलपी डिजिटल लाइट प्रिंटिंग जोते कि आपन रेजिन थी फोटो सेंसिटिव रेजिन will be cured with the help of UV rays okay UV ray or laser तो once तर क्यूर होला परे solidify layer by layer solidify होला परे जेता सेटा बिजनेस प्रोसेस करिवा सेतरे फ्रेश रेजिन भी रहिते परे तो सेटा को हीट करिया पे और सेटा क्यूर करिया पे फर्दर एटा के पोस्ट प्रोसेसिंग कराए अनदर एग्जांपल ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग होची मेटल पार्ट्स जेता हम मेटल 3D प्रिंटिंग करिवे फॉर एग्जांपल पाउडर मेटल पाउडर ने 3D प्रिंटिंग कर तो कोडा बना सेतरे पार्ट बन सला परे बहुत बड़े मेटल पाउडर अनसिंटर्ड थी और अनमेल्टेड थी जोटा कि सरफेस सहित लगे तो सरफेस रफनेस को पड़े राइट सो ताकि प्रॉपर्ली सरफेस फिनिश दवा पे हमें को सैंड ब्लास्टिंग कर सैंड ब्लास्टिंग का आइडिया है सैंड ब्लास्टिंग माने माने कंप्रेसर थी कंप्रेसर विल impinge high pressure jet air along with abrasive तो abrasive components का surface को clean करो और unsintered powder remove करो ठीक है तो सिस्टम में पोस्ट प्रोसेसिंग में जाए तो once post processing is done अपन चेक करें प्रोटोटाइप ठीक अच्छी कि नहीं it is as per the design or not यदि ठीक तो डिजाइन तो the match code flow then it is fine okay you don't need to again remodel the part डायरेक्टली से प्रोटोटाइप यूज करते हैं जैसे तो ये साइकिल का होची एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल इज द बेसिक फंडामेंटल साइकिल ऑफ एडिटिव ओके so it could start with also the CAD model digital validation any software आपण यूज करते हैं SolidWorks Kandi किंवा any AutoCAD software destination then G code generation करके हमें 3D printing होला पर पोस्ट प्रोसेसिंग then final so basic अब हमें देखो ये स्लाइड रे और डेटा केमिति फ्लो हमें दो फॉर्म रे डिजिटल फाइल हम जनरेट कर पाए गोटे एग्जांपल में कहली सॉलिडवर्क्स 3D CAD मॉडल आएगा सॉलिडवर्क्स को काटिया ठीक है 2D CAD मॉडल को नहीं करेंगे थिकनेस का काउंट पॉइंट क्लाउड डाटा एनी आइडिया पॉइंट क्लाउड डाटा आपण रिवर्स इंजीनियरिंग जानछथि 3D स्कैनर जानछथि 3D स्कैनर सपोज आपण गोटे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आपण पर अछि सपोज ए जिंसटा को डायमेंशन और मु जानि बहुत कॉम्प्लेक्स राइट 80 डायमेंशन होगा आपण एक्यूरेटली एटा मेजर कर परियो किंतु 3D स्कैनर अवेलेबल अच्छी मार्केट रे जोटा कि ए पर्टिकुलर पार्ट को स्कैन करे कौन होना ईच ऑफ द सरफेस will be stored or will be scanned in
the form of point cloud data. मैंने ये सरफेस पे डिफरेंट से पॉइंट जनरेट करके सही पॉइंट को से इंटीग्रेट करके पर्टिकुलर ए पार्ट रो कैड मॉडल बनेगा. ओके, तो माने आपण कैड मॉडल पाई गले, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है कैड मॉडल तापर रेजोल्यूशन तापर स्लाइसिंग डिकोड देन तो এটা হচ্ছে পয়েন্ট ক্লাউড ডেটা which is also called reverse engineering. Reverse engineering মানে हम पाखरे आर डायमेंशन नहीं किंतु पार्टटा আছে এই পার্টରୁ ଆମେ actual ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବା, that is called reverse engineering. ठीक है. Now we will data acquired from MRI or CT scan. MRI CT scan ଜାଣିଛନ୍ତି? MRI CT scan hospital ରେ ହୁଏ, suppose କାର bone fracture ହେଇଛି କି କାର ଏନି ହାତ ଫାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି. तो ଆପଣ actually ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ବସଛେ ଆମର ସବୁ ପାର୍ଟ each and every human being is different in size and shape. General shape is same, but dimension different. ठीक है जी. जब सपोज जणको हाथ भांगला तो एटा को स्कैन करके हम सपोज तार इम्प्लांट बनेला, केमती बनेला तो स्कैन करियो पड़िबो. स्कैन कले सपोज हम सीटी स्कैन यूज करियो, सीटी स्कैन यूज कले हम गोटे फाइल मिलियो in the form of images that called the DICOM file, DICOM, DICOM file. Okay, so DICOM file को हमें CAD model भी बनाई पड़े with the help of other softwares like Mimix, Mass Picture. ठीक है जी. तो same series of images को DICOM file को हमें CAD model में convert करते हैं. Data भी आउट है, data flow. डायग्राम फाइल को हमें रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कैड मॉडल बने देते हैं. तापर स्केल फाइल और डेसिमेटेड फाइल, तापर हमारा जी कोड डेटा, ज्योमेट्रिकल डेटा, तापर हमारा मशीन इन्फॉर्मेशन का फिगर. तो एक डिफरेंट वे रे हमें डेटा कलेक्ट करके हमें कैड मॉडल को हमें कन्वर्ट करते हैं. वंस कैड मॉडल अपन पर प्रिंट. ओके, तब उसे कौन पे अपन यूज करिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, सपोज अपन भाबी मते गोटे मास मैन्युफैक्चरिंग करे अछि और बल्क मैन्युफैक्चरिंग करे अछि, सेठी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जरूरी को. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एटा गोटे बहुत बेसिक लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग एटा टाइम नहीं. तो अपन जे कहले तो इतने मास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एटा केबे स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So additive manufacturing process or 3D printing process is always on demand printing. जो demand आसलो से थोड़ा अपना print करेंगे और fabricate करेंगे. और जितना patient specific और product specific जितना आसलो आपको demand से थोड़ा अपना ये यूज करेंगे. और जितना complex shape जो suppose जोड़े आप part बने हुए जोड़े कि turning रे एक बार होते हैं कि conventional manufacturing एक बार होते हैं. then आप additive manufacturing का बोले एक part but it is बहुत complex, different lattice and different pore sizes. तो इधर का अपना normal casting और normal machining और normal forging operation अपना fabricate करते हैं. तो ताकि आपको additive manufacturing करते हैं. ठीक है. Next होती है material complexity. कोई सी different सब material use करते हैं. हम casting का different material use करते हैं, जिससे again तो बहुत complexity और constraint है. अपना एडिटिव मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग है, मटेरियल यूज करते हैं. तो मटेरियल कॉम्प्लेक्स है. ये एग्जांपल है इसमें फिजिकल लेयर प्लेन को थ्रू रच. ठीक है जी. अब इसका लेयर 25% डिफरेंट ऑक्साइड है. नाउ इसका लेयर 50% डिफरेंट ऑक्साइड 50% है. तो सेट आउट का हमारा एडवांटेज एडिटिव मटेरियल मल्टी मटेरियल करते हैं डिफरेंट लेयर्स. तब ये और फंक्शनल कॉम्प्लेक्स जितना अपन फंक्शनल पार्ट बने हुए हैं. एक्चुअली फंक्शनल पार्ट मतलब बने हुए हैं. अपन ये जानते हैं कि अग्निकुल बड़े स्टार्टअप एक इवन पूरा फुल्ली असेंबल्ड फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट बने हुए जो कि लॉन्च हुई अग्निकुल स्टार्टअप बैंगलोर स्टार्टअप. तो इसके बाद दैट इज फंक्शनल पार्ट, राइट. तो अपन एग्जैक्टली फंक्शनल पार्ट को डायरेक्टली अपन यूज करते हैं. तो पूरा आइडिया है. ठीक है.
history. First additive manufacture from 1986 Charles Hull developed the first additive manufacturing process. The title of stereolithic process. Stereolithic process. It was a resin-based additive manufacturing process. You think resin through but a vat, whatever what with resin. Resin मतलब photosensitive है. Photosensitive में क्या होता है? जब हम light की बात करते हैं, laser production cure हो. Cure मतलब solidify हो. Okay. तो solidify है layer by layer solidify करके से part हो. तो फिर हम सिर्फ 25 of 1996 से and then 3D system आपको help करेंगे. First stereolithic का बना. Okay. Then biomedical application में ऐसे रहता था. First development of medical field से वर्ल्ड लेवल डेवलप करके 1999 में ह्यूमन किडनी से ट्रेन किया. तो ये हिस्ट्री का हम देखो कि प्रेजेंट में बायोमेडिकल अप्रोच 2006 रे इमीडिएट सेल प्रिंटिंग माने डायरेक्टली अपना इंसर्ट और बायो इंसर्ट अपना सेल को भी प्रिंट करते हैं और मल्टीप्लेटर 2010 में prototype blood vessels prototypes on development 2010 and 2019 में the recent 3D printed the lung and the liver. Usually liver and lungs ताकि किसी alternative नहीं अगर किसी का donor ना है तो इतने में बहुत बड़ा challenge हमारे donor को तो मेरे समस्त प्रोटोटाइप्स तो सेवन ट्राई कर सकते हैं कि क्या लिवर एक्चुअली लिवर केमती हमें ये करेगा ट्रेन करेगा सो टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट मटेरियल हम कौन यूज करते 3D प्रिंटिंग के now we basis करके तीन प्रकार আছে solid based paste based and liquid based resin based तो solid based तो देखो ये wire is solid এটা fused dimension model सेमती वहाँ होने आउट एग्जांपल अच्छी वायर आर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो इसमें मेटल वायर और वेल्डिंग रॉड फीड हुए थोड़ा मेल्ट हुआ है थोड़ा लिक्विड देंगे लेयर बाय लेयर लिक्विड देंगे पार्ट तो इसको सी वाला टाइप ऑफ पाउडर बेस्ड जो होता है कि पाउडर मटेरियल पाउडर फॉर्म में यूज हुए जैसे मेटल 3D प्रिंटर अपन देखते हुए कि एसएलएस देखते हैं सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो देखिए powder polymer powder or metal powder with a battery flow through laser source selectively the melt किंबा sinter करेगा ठीक है जी तो टोटल फर्स्ट लेयर मेल्ट अच्छी तरह पुणे अगेन रिकोट तक पूरा ऊपर फ्रेश पाउडर स्प्रेड करेगा पुणे ऊपर मेल्ट करना तो एंटी सिलेक्टिव ये करके मेल्ट करके फाइनल पार्ट में बनेगा पाउडर पेस्ट Foil based 3D printing is very rarely used. It is laminated object manufacturing, which is called LOA. तो देखिए शीट वगैरह का हमें ग्लू करके के विद प्रेशर हमें फाइनल पार्ट बनेगा. देन पेस्ट बेस्ड इससे कौन होगा ना हमें इंक यूज करेंगे इंक और सॉल्यूशन यूज करेंगे पेस्ट यूज करेंगे विस्कस पेस्ट देखते हुए आप तो सुतारे प्रेशर देवे तो से बाहर हो यदि हम प्रेशर न देवे से बाहर हो तमने यार विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी है विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी माने बोथ लिक्विड एंड सॉलिड प्रॉपर्टी है जेतो अपन फोर्स देवे से तो बाहर हो तो सही प्रिंसिपल टा अप्लाई करके ये पेस्ट बेस्ड 3D प्रिंटिंग का डेवलप हो जो तरीके की पेस्ट यूज है विस्कोइलास्टिक पेस्ट यूज है तमने जेतो है এটা ଗୋଟେ সিরিজ ভিতরে থাকে যেତେବେଳେ ଆପଣ ତାଦେହରେ ପ୍ରେସର ଦେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ନଜଲ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଆମର କ'ଣ ବେଡ୍ ଉପରେ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦେଉ ଓନ୍ଲି ଆମେ ସିରିଜ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛୁ ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିରିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ସେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେପ୍ ଯେମିତି ମାନେ ପଡ଼ିଛି ବେଡ୍ ଉପରେ ସେଇ ସେପ୍ ହିଁ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍ ଫିଡେଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି ବାୟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟର
तो also know the extrusion based readability. दूसरा कि हमें solution पे extrude करना डिटेल से भी लिक्विड बेस्ड क्वालिटी प्रोसेस स्टील लिथोग्राफी और डीएफटी और डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टूटी ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଥିବ ବ୍ୟାଟ୍ ଭିତରେ ରେଜିନ୍ ଥିବ ଫଟୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ରେଜିନ୍ ଥିବ ଲେଜର ପଡୁଥିବ ସେ ରେଜିନ୍ ଉପରେ ଓକେ ଲେଜର ପଡିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଫଟୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ରେଜିନ୍ ସିକ୍ୟୁର ହବ ସିକ୍ୟୁର ମାନେ ସଲିଡିଫାଇ ତ ଲେୟର ବାଇ ଲେୟର ସଲିଡିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଫାଇନାल ओके so these are different types of 3D printing major applications proof of concept of engine, complete engine which is made by metal 3D. Okay. It has a biomedical application. It has a PhD work on the practical scaffold for with the help of biomedical. I think the 3D printing food industry will be utilized. There is a functionally graded material, different structures. That is structure is like for biomedical impact or for bone impact. Okay, load bearing impact. For electronics also, they use those. अब ये जो इंग्लिश में स्टूडेंट होते हैं आईटी मात्रा से, डिजिटल करेंगे, दावास्ता बटे स्टार्टअप अच्छी, ओके, दावास्ता स्टार्टअप फर्स्ट, ने डेवलप करते हैं आईटी मात्रा से, तो पोस्ट ऑफ सोर्ट मात्रा से, तो डेवलप 3D printing. Okay, so 3D printing in different applications like prototyping, biomedical, food, biomedical, electronics and construction as well. So different applications by 3D printing are available. So briefly, different types of 3D printing to cover the limit. First type of steel is one SLA. SLA में कोई चीज़ आगे VAT होते हैं तो ना VAT इतना अपन रेजिन थी वो ठीक है जी तो लेजर ऊपर सिलेक्टिवली पड़ेगा ये रेजिन ऊपर है तो सिलेक्टिवली कौन क्यों करेगा सॉलिडिफाई करेगा तो लेयर सॉलिडिफाई करके फाइनल पार्ट ठीक है तो सेम इट्स बेस्ड ऑन द लेजर ट्यूनिंग ऑफ लिक्विड रेजिन लेजर फीड क्यों द लिक्विड ओके फॉर्म लेयर like US based company SL based application just interesting application of lithotraphy steel lithography or SLA usage okay from the patient from blood vessel okay IoT car today देखते हैं constricted age तो ये जगह देखो constricted age तो blood pressure काफी high है blood flow जितना हुए patient को बहुत suffocating लगे ये तो यदि blood pressure काफी high है तो सही पार्ट को हमने स्कैन कर सकते डॉक्टर ने स्कैन कर लिया विद हेल्प ऑफ सीटी स्कैन और एमआरआई तो सही पर्टिकुलर स्कैन के साथ रिकंस्ट्रक्ट कर ले सब क्लियर कर विद हेल्प ऑफ डिजिटल गाइड मॉडल में समझ में को नॉर्मल सिग्निफिकेंट ये कर ले और सही पार्ट को कॉर्नर कर विद हेल्प ऑफ एसएल और एसएल पर है सही पार्ट को समझ में लॉक तो रिसर्जरी व्हाट इज द material so I think PMM since it is SLA it is polymetal material okay similarly data implant type that application digital file looks final होते implant होते ठीक है it already it is basically selective laser sintering but it is powder would use it either polymeric powder or metal powder polymeric or metal powder होते हैं bed open to this is the bed open polymer or metal powder use करो laser पड़ेगा laser selectively scan होती selectively scan करके क्या होगा ना each and every layer will be scanned and will be melted और सिर्फ पासिंग कर फिर आपने पूरे आउटलेट फ्रेश पाउडर आपने डिपोजिट किया पूरे आउटलेट स्कैन होगा ठीक है EOS is a German based company SLS SLA it has application particularly biomedical application है ये इसका आप देखते हैं it has बोलते हैं human skull जो है कि directly यदि आप मिट्टी देखते हैं अपन मिट्टी से नॉक हुए मिट्टी की नाई बोन नहीं
तो सही बोर्ड में को डॉक्टर ने फिलअप कर चुके इधर को सिलेक्टिव रेजिस्टेंस सिलेक्टिव फिलअप कर जब फर्स्ट सीटी स्कैन करो ठीक है जी सीटी स्कैन और एमआरआई जो डेटा का मिला चलो कैट मॉडल कन्वर्ट करके समाने प्रिंट करते एसएलएस यूज से मटेरियल का होची एटा पीसी रे पॉलीकार्बोनेट ठीक है पॉलीकार्बोनेट को बायोमेडिकल बायो इम्प्लांट का यूज है तो एटा यूज बनला पर समाने ए इम्प्लांट को एक डायरेक्टली इम्प्लांट करो ठीक है जी तापर ए जो स्टैंडर्ड है सेकंड स्टैंडर्ड अपन देखिए रीजनरेट हो ये क्वेश्चन का रीजनरेट है अपर को बोन जनरेशन है तो भी इंटरेस्टिंग अपन फ्रैक्चर को और स्कैन करके एग्जैक्ट कैड मॉडल बने से का अपन प्रिंट करके अपन बेटा ये क्वेश्चन का और इफेक्टेड एरिया को अपन रीजनरेट करते हैं कंप्लीटली तो जेटा बोले वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द तबरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी को एक बेसिक 3D प्रिंटिंग आजकल सपोर्ट अवेलेबल होची एक प्रिंटर का एफडीएम देखिए आपण फिलामेंट यूज करछथि प्लास्टिक फिलामेंट और पॉलीमर फिलामेंट तबरे एटा मेल देकी गोटे हिटेड नोजल अछि हिटेड नोजल अराउंड 0.4 mm डायमीटर तरफ तो मेल देकी ये पार्ट हो जाए ठीक है एज पर सी कोड से मूव करियो ओवर द प्लेटफॉर्म पार्ट तो there is a polymer plastic filament used है filament और स्पूल जब लगे एक स्पूल ठीक है नॉजल वाले को ठीक है जी मटेरियल डिफरेंट प्लास्टिक्स एबीएस पीएलए टिप्स ये सब मटेरियल यूज करते हैं और फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन है मेनली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सपोज टू ट्रेनिंग का अपना देखिए ओके मतलब अपन सेंटर इम्प्लीमेंट करेंगे इस कॉल लेके फिजिकल करके अपने के लिए इस पर ठीक है तो मेनली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का एप्लीकेशन इधर और फिगर प्रिंटर टाइप इट आउट मेटल बेस्ड प्रिंटर लेजर इंटीग्रेटेड रेक्टेंगुलर लेंस ओके और डायरेक्ट कैमरा डिपोजिशन और डी ओके सो एग्जैक्ट पाउडर है ये पाउडर ऑफर है ये जो पाउडर ऑफर मेटल पाउडर स्प्रे है ठीक है our laser source to high power laser source around 400 minimum 400 watt minimum ये laser source का focus भी नहीं कि ये powder filter to get और ये powder जो filter filter द्वारा लोगों को clean कर लो और ready कर लो और ये नहीं चलेगा ऑपरेटिंग बहुत पॉपुलर कंपनी और इससे लिक्विड लेजर प्रिंटिंग निकॉन जो कंपनी हम सुनते हैं ये बेस्ड निकॉन SLM जो है सीरीज ऑफ मेटल पार्ट मेटल any metal powder can be printed. How does it sound? Some metal powder printed with copper, but metal powder is printed. How to print it actually? Copper में बहुत high reflectivity. तो आपने ये पढ़ो अपन लेजर पढ़े तो रिफ्लेक्ट करो और हाई थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी जल्दी है पास में करो इससे वेरी थर्मल प्रॉपर इसलिए कि जो भी मेटल सिग्नेचर रहने के लिए आशुके प्रॉपर पे ये पर करना क्योंकि प्रॉपर इनडायरेक्ट 3D प्रिंटिंग के लिए रिवर्स का एग्जांपल देता हूं दिस इज लोड बेयरिंग implants metal made out of metal 3D printers in a bone hip implant similarly different alloy making manufacturing it out a load bearing implant bone implant next one solvent based extrusion type में हमें 3 प्रकार था ऑलरेडी कोई solvent based में कौन solution और ink type वो देखते हुए सीरीज अच्छी ये वाले solution और ink तो एक मोटर लगती है मोटर का इधर प्लाजर से कनेक्ट है इधर मोटर का बोलेगा ये प्लाजर मूवमेंट सॉल्व से पड़ा होगा ये सॉल्यूशन का पूरा एक नोजल इधर एक्सट्रूड होगा वो प्लेटफॉर्म आज तो जी कोड आपको देखते देखिए प्लेटफॉर्म पे से मूव करिए और डिकोड कर सकते तो ये सामने में जो कोटे टाइप का सीरीज सिस्टम बिल्डर सर न्यूमेटिक बेस्ड जो कि कंप्रेस्ड एयर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पुश करते हैं
push kale kona hobo to the nozzle eta print condition ro kare pattern eta hoche screw based like what the screw was screw that moving carrying forward moving particularly code in the straight is right eta nozzle extrude hobo pattern finally upon part of it different companies like Biomedical, Biometrics, Novamate, food industry leaders, like food filter, and any sort of that. There is a sort of case study with the tracheal implant. Tracheal means green pipe, and connected with the biomedical or biomaterial. Biomaterial means two materials are body implant कर ले. किसी रिएक्शन को मतलब किसी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को ठीक है जी तो फर्स्ट स्टेप होची कैट वाटर यानी 3D प्रिंटिंग का फर्स्ट स्टेप होची कैट वाटर नेक्स्ट होची स्लाइसिंग करे आप कौन भी होती कौन भी तापरे टेम्पलेट बनाएंगे जहां पर भी प्रिंट हो ठीक है जी इंक प्रिपरेशन देयर फॉर पीसीआर इज पॉलीकार्बोनेट व्हिच इज बायोमेडिकल और बायोकम्पैटिबल You use polyurethane, medical grade polyurethane. 18 mixer है, तापरे 3D printing है. Actual setup जो दिखे, step 1 step 2 है, CAD model और Z-code generation. जो कि हम 3D printer को दवा, ink preparation, जो कि हमें nozzle को दवा, nozzle जितना हमें ink पाएगा, और ये वाला motor, क्या series का, motor पूरे series compressor और nozzle जो ये solution है extra. तो template printing जो कि client. Actually printing का मतलब दिखते हैं इधर rotating handle ठीक है ये rotating handle उधर है दूसरा nozzle का print होता है liquid form जिसे अपन जब देखते हैं normal 3D printer है flat bed उधर आप print करोगे ठीक है जी ये flat bed है तो एक क्वेश्चन है इसका होता है rotating handle उधर print होता है which is already patented ठीक है The rotating manual will print advantages from they will be hollow or cylindrical type और जो टेम्पलेट ऊपर प्रिंट में एग्जैक्टली सही जगह पे सेम वाला तो अपन यदि सिमिलर कॉम्प्लेक्स पीडीएफ के बनेगा अपन तो इतना बहुत सपोर्ट करके वर्क करो लेकिन एक्सपेक्ट टू प्रिंट विद द पैटर्न इट्स लाइक a rotating application rotating manual application the biomedical application manager cells support checking biocompatible no these are the cells that grows over the scaffold then these are the applications artificial skin is also there scaffolds then for catalysis knee catalysis okay just made up of hydrogens Imaginate and gelatin, hydrogen transfer. Then these are again standard applications. In our application, we will be cardiovascular stunt on it. There are no critical. Cardiovascular stunt upon which we will be artery relaxation. So blood looking at it. It also degradable, biodegradable cardiovascular stunt. So that is made PLA. PLA also biocompatible material or biodegradable material. That is polylactic acid. ठीक है? In our application तो देखिए अपना directly polymer part को mold बनेगी, फिर iron part को fill करके अपना iron part बनेगा, metal part. ठीक है जी? directly अपना छोटे अपना polymer part को mold बनेगा अपना iron scaffold बनेगा और iron part बनेगा. ये तो indirect benefit. दूसरे की डायरेक्टली आपण डिलिव्हरी पर एक मेटल पार्ट बनवणार आहे किंवा आपण पॉलिमर टेम्पलेट नाही मोल्ड बनवली की आपण मेटल पार्ट मोल्ड ब्रेक आफ्टर मोल्ड इट इज ब्रेक्स आफ्टर मोल्ड मागे मोल्ड व्हायला मोल्ड प्लास्टर पॅरिस फ्लेक्सिबल होता आपण मागे तर आपण डायरेक्ट आपण मेटल डिलिव्हरी नाही नाही करू शकतो चीज मेटल डिलिव्हरी आपण डायरेक्ट करतो डायरेक्टली मोल्ड बने के अपन आयरन कोई भी मेटल पार्ट यूज करके तो सिंटर करके अपन मेटल पार्ट बने कॉम्प्लेक्स सिमिलरली ये पार्ट है मैंने फर्स्ट स्कैन कर लिया अपने डिजिटल फाइल बने ले अपने मेटल पार्ट सेम
आवडे आधी प्रॉपर सगळं ट्रेन करतो इंडायरेक्ट ट्रेन प्रॉपर सगळ्यांनी युजली ट्रेन होईल ट्रेन होईल तर मला ॲक्च्युली फर्स्ट स्कॅड मॉडेल बनवले त्यानंतर ट्रेन करायला एसएलआर तिथे रेझिन आणि मोल्ड बनवले मोल्ड बनवल्यानंतर तिथे रेझिन पेस्ट टेम्पलेट टाकून बर्न आउट करतो फिर ते बर्न आउट केला परे त्या बोल्ड वेळेला बोल्ड मिरर सगळं प्रॉपर ऑर्डर में फिट कर प्रॉपर प्रोडक्ट फिट केला परे very finally part so exactly same as the digital files में different lattice structure बनवले ये मेरा तो pure था जोड़े कि आपण metal से डिजिटल परिवर्तन रिफ्लेक्ट करो now it is different जैसे कि most of the ink जो हमेशा जैसे ink का percentage होती है और filling होती है 90% more than 90% but 10% of the polymer so मैंने green part condition है Biomedical then same part comes and again single rated or metal part ठीक है कहते हैं वो ड्रेस टाइप्स कम है तो मोल्ड बनेगा डायरेक्टली इस कापड़ को इस कापड़ को सिंटर करके डायरेक्टली मेटल पार्ट तो ये आउट डायरेक्ट रैपिड फिलिंग का एप्लीकेशन दिस इज कॉल्ड आल्सो रैपिड ओके तो मेरे पास टिप जॉइंट को स्कैन कर सकते मिमिक सॉफ्टवेयर है तो मैंने प्रोसेस करके या डायमेंशन बात कर सकते डायमेंशन बात मतलब है तो मैंने कैड मॉडल बना सकते तो कैड मॉडल को मैंने एसएलआर प्रिंटर द्वारा एसएलआर जिस चीपर ठीक है चीपर प्रिंटर जितने यूज प्रिंट कर सकते अपने मोल्ड फैब्रिकेट कर सकते एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर पैटर्न मोल्ड कला है সেটা বর্ন আউট করছেন পলিমিটার ওডিজিও মোল্ড টাকা দ্বারা তারপরে তাদের টাইটানিয়াম অ্যালয় TI6N4V গ্রেড 5 ओके टाइटनियम वाले पार्ट को यूज करके आप शिटर करके आप डायरेक्ट आपको लेवल निकाल सकते तो ये आवड़े रैपिड टूलिंग का एप्लीकेशन challenges the large volume जो हमें प्रिंट करना काफी डिफिकल्ट है मेरी large volume printing is quite difficult construction में actually और चाहिए क्योंकि for this polymer printing and resin large volume printing is quite difficult and slow printing बहुत टाइम ले ये तो लेयर पे लेयर मैन्युफैक्चर कर सकते बहुत टाइम ठीक है लिमिटेड मटेरियल लगा मैं इतनी नहीं कि हमें सब लिमिट करना सब मटेरियल यूज करना जो मटेरियल जो अवेलेबल है लिमिटेड तो हम परचेस करेंगे जब हम नीचे बने पर होता रहता है एक्सपेरिमेंट करते इंटरनेशनल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल इन लोअर डायमेंशन एंड additive printing cost effective always remember कि 3D printing का software है small volume में cost effective not for mass manufacturing or mass production मुझे प्रश्न है मल्टी एक्सिस प्रिंटिंग यदि वो देखते हैं कि रोटेटिंग मैनुअल ऊपर प्रिंट प्रोसेस मल्टी एक्सिस XYZ and other rotation जैसे ये 5 एक्सिस प्रिंटर है ऑलरेडी जो देखिए अपना CNC का CNC पार्ट का CNC 5 एक्सिस CNC ने हो जाएगा 5 एक्सिस CNC पर सबमिट डिग्री ऑफ फ्रीडम इस प्लेटफॉर्म पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का तब बहुत ज़्यादा सेट हो जी मल्टी एक्सिस इंटीग्रेशन मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग और तो देखते हैं खाली गोटे पेपर मटेरियल प्रिंट तो मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग अगेन चैलेंज तर रिसर्च अपॉर्चुनिटी আছে তাহলে আমরা डेवलपमेंट ऑफ बायोमेडिकल बायोमेडिकल के अवेलेबल है सर प्रिंटेबल ओके सेटा लिमिटेड अवेलेबल अब पॉसिबल and more investigation are required for the integration of different variations different between practical life science mechanical इसलिए का mechanical now is civil construction ठीक है जी अगर बायोमेडिकल इम्प्लांट डेवलपमेंट है स्कैफोल्ड डेवलपमेंट टिश्यू रिजनरेशन है তারপরে আমরা ইলেকট্রনিক্স এর আজকে সার্কিট ডাইরেক্টলি প্রিন্ট করছি সার্কিট প্রিন্টিং এটা রিসোর্স ইননো হচ্ছে সো अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड थैंक यू AICT and Constellation College for giving the opportunity question किसी परेज को अपना पेपर से Thank you, sir. Any question?
traditional why and why not? Traditional manufacturing. Traditional manufacturing. Traditional manufacturing our different application by usual 3D printing our different application. So both these are the equally important manufacturing process. Right? If we mass manufacturing करेगा, तो हमको traditional manufacturing जरूरी है. Suppose हम कोई cylinder बने, normal cylinder बने, तो ले इधर direct से कर दे. 3D printing कौन करेगा? Metal 3D printer. Right? जब हम कोई stock अच्छी, की workpiece अच्छी, तो direct तो normal ले इधर हम कर करेंगे. because आपण जर सेम पर्टिक्युलर सिलेंडर प्रमाणे मेटल 3D printing करूया तो कोण तर कॉस्ट असते मेटल 3D printing जोडे 3.5 करोड असेल कोणी तर ऑर्डर पर केजी अराउंड 10,000 तर कंज्यूमेबल असते कंट्रोल एनवायरमेंट करता कोणी सिटी बड़ा पार्ट बनेगा करे जोडे की सिटी प्राइड वो ट्रेडिशनल एंड दिस additive manufacturing to are equal importance. Thank you, sir. Now, I request to sir a very effective session and interesting session to deliver nicely and with good examples also. So I would like to request our HOD sir, technical HOD sir, Professor Prasanth Kumar Mahanta and Project Professor Anand Kumar sir to translation our guest. Thank you, sir. ଏବେ ଆମେ ଟିକେ 5 minutes ରୁ 10 minutes ଏକ୍ସାମ୍ ନେବା ବାହାରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାପରେ within 15 minutes we will hear only join the next session. Professor sir ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡେରି କରିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା. Thank you.